So in the endocrine system, we have another organ that is pancreas, which is very important organ, which is situated below the stomach, upper quadrant of left side. This is the right side. This is the left side. So in the left side, we have pancreas. Okay, in the abdominal cavity, we have left side pancreas. Okay, and it is around the pancreas we have duodenum, okay, small intestine, and as well as spleen. Okay, so pancreas work both exocrine and endocrine. So what does mean exocrine? Basically, it have two functions. What the pancreas have? The pancreas have two functions, two types of functions. One is endocrine functions, and second one is exocrine function. So basically, it will work as it will release the hormones, okay, and as well as enzymes. Exocrine means which will not direct release the hormones or any things into the bloodstream. That is known as exocrine. It will release the substance. Whatever organ is producing the chemical substance, it will not release in the blood. So that type of glands are known as exocrine glands. So pancreas have the capacity to release substance into the organs. Like it will release its digestive enzymes. So pancreas have, we will talk about detail in the digestive system. Okay, but here the introduction part. ओके, सो यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पैंक्रियास के बारे में, डिटेल हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे. तो इट विल हैव enzymes, it will release the enzymes into the duodenum. Okay, so what are the function, what are the enzymes, we will talk about details in digestive system. And the other function of pancreas, that is endocrine, means it will release its substance, chemical substance, into the bloodstream. So what are those substances and which part of the pancreas will produce endocrine hormones? It is very, very important. So basically, let's go to the image of pancreas first. Okay, this is the pancreas. Okay, this is the pancreas. This is most of the pancreas. This is here. It will release the endocrine, sorry, exocrine hormones, and it have larynx of islets of larynx. Okay, islets of larynx. Okay, these are the cells which produce, which are present in the pancreas. Okay, over the pancreas. Okay, it will produce the hormones. So what are the hormones? Okay, so basically they are cells. Islets of larynx have three types of cells: alpha, beta, and delta. Here delta is not given. Okay, only we will talk about alpha and beta. Okay, so alpha cells produce glucagon. What it will produce? It will produce glucagon. Okay, and beta cells produce insulin. Okay, so let's see the image of the pancreas first. Islets of larynx, alpha cells, beta cells. Okay, hmm. So basically, so this is the very good image. Okay, so you can see that in that image. So basically, this is the cells, pancreatic islets of larynx. Okay, in that we have three types of cells. Here we have alpha cells, beta cells, endocrine SNI cells. Okay, so basically alpha cells will release
glucagon, and beta cells release insulin. Okay, these are the very, very important hormones. Okay, alpha cells release glucagon and beta cells release insulin. So the other parts of the, this is the other part of the pancreas which produce enzymes, digestive enzymes. Here we have the duodenum. This is the small intestine. Okay, in that the pancreatic juice or enzymes will release here, and it will digest whatever product will come here. Okay, this is the uh, gallbladder duct, bile duct. From that gallbladder, bile juice will come. Bile juice and pancreatic enzymes or digestive enzymes will mix together and will release into the duodenum. Okay, this will talk about detail in digestive system. So this is the spleen and this is the duodenum. So here nearby organs are, and above the pancreas we have stomach also. So these are the three organs which are connected to each other. Okay, spleen, pancreas, and this is the duodenum. And in the duodenum, these are the star-like substances. You seeing, this is the stars. Okay, these are the islets of Langerhans. So islets of Langerhans have three types of cells: alpha cells, beta cells. So यहाँ पे समझने की बात ये है कि पैंक्रियास है, ये पैंक्रियास है, ये स्प्लीन है, ये ड्यूोडेनम है. सो पैंक्रियास के अंदर आपको दो तरह के काम देखने को मिलते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन का मतलब क्या है? जो भी ये पैंक्रियास अपने सब्सटेंस को बनाता है किसी ऑर्गन में छोड़ता है, या फिर कोई भी ऑर्गन हो, जो भी ऑर्गन हो वो अपने सब्सटेंस को किसी ऑर्गन में छोड़ता है, ब्लड वेजल्स में नहीं छोड़ता. अगर वो ब्लड वेजल्स में अपने सब्सटेंस को छोड़ता है तो वो एंडोक्राइन. अगर वो किसी डक्ट के थ्रू, ऐसा कोई पाइपलाइन के थ्रू अगर किसी ऑर्गन में छोड़ता है तो वो एक्सोक्राइन बन जाता है. तो यहाँ पर देखिए हमारा इंपॉर्टेंट है ये सेल्स, जो स्टार्स लाइक सेल्स नजर आ रहे हैं ना, इसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैरिंगस. तो इसके अंदर दो टाइप्स के सेल्स है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. अल्फा सेल्स का काम क्या है? ग्लूकागॉन को बनाना. बीटा सेल्स का काम क्या है? इंसुलिन को बनाना. ठीक है. So this is all about pancreas. Now we will talk about alpha cells and beta cells and about glucagon and insulin. So basically, before this uh, entering into the topic, we need understood about some. I think this is. I think digestive system will come first, and then after endocrine system will come. Then we will easily understood. But here the pattern is different in this textbook. So first they give endocrine system, later they will give digestive system. So basically, so here we need to understood little bit thing about digestive system, because after the digestion only, okay, the whatever we eat, it will convert it into the uh, okay glucagon, okay, or glucose. It will convert into the glucose, then after it will reach into the bloodstream, then after it will reach to the cells. So this is the basic concept we have to understood before entering into the topic. So basically whatever we eat the food, what we will do, mastications, then it will the chim, then will enter into the stomach. So whatever we eat the food, we will chew it with the teeth, then we will swallow. Okay, with the help of esophagus, we have food pipe. Okay, we have food pipe. Here we have the mouth cavity. In the mouth cavity, we have teeth. Okay, so basically, with the help of swallowing, it will enter into the esophagus. After entering into the esophagus, it will enter the stomach. Stomach will mix all the digestive juices to the food, and uh, do chemic. Okay, means very thinner substances. Okay, it will break down all the food material into the small pieces. Okay, then it will enter into the small intestine, where the absorption will occur. Whatever food we will eat, digestion will occur into the stomach, and absorption and whatever material is present. Basically, there are four types of different things available in the food. Okay, it may be protein, it may be fat, it may be carbohydrates, or it may be other minerals, vitamins, etc. etc. So whatever food you eat, it will convert into
carbohydrates. Okay, glucose, simple glucose molecules. So whatever substance will enter into the duodenum, it will absorb. After absorbing, what will happen? What will happen? It will enter into the bloodstream. Okay, it will enter into the bloodstream. After that, what will happen? It need more correction. It will need more simple substances. Okay, metabolism to enter into the cell. Okay, so in the metabolism we have two types of things: anabolism and catabolism. We will not discuss about those two things. We will discuss into the uh, digestive system. Okay, so those two things will happen: anabolism and catabolism. So basically, the liver will do this function. Whatever metabolism means simple things you have to understand. The ability of the cell, according to the ability of the cell, we are providing the food. Means we are not. Liver will provide the food. Okay, according to his ability, cell ability, not our ability. Cell ability. Cell is very small and it will need little substance, little food, little energy, little nutrition, oxygen. Okay, for his performance, for his work, daily function. Okay, so liver will do that. So here we need two things. Either after entering into the cell, it will utilized or maybe stored. Okay, it will utilized or maybe stored. If how it is utilizing, if we are eating the food, if you are taking rest, the cell will assume that whatever energy I took, now I did not want to function it. So cell will store it for future preference. But after eating food, you take 10 to 15 minutes nap afternoon. Then afterwards you enter into the any work. After you are doing your daily jobs, work, or going walking, okay, playing anything. What will happen? The cell will assume that I didn't take rest. I have to utilize my energy, whatever nutrition, whatever things I gain, I have to utilize it. Okay, so it may be stored, it may be utilized by the cells. So basically, what will happen here? The need of hormones is necessary for us for store purpose or utilize purpose. Okay, for store purpose or utilize purpose. So these hormones are very beneficial for that purpose. Okay, so basically, cell need energy. Cell and energy will get from the food whatever we are eating. So if and according to his ability, the liver will do metabolism. Okay, so the liver will do metabolism, then only the molecule sizes decreases, then the cell will able to take it. So here, whatever carbohydrate, whatever glucose is present into the cell, it is given through the help of insulin. Okay, so basically, receptor. Insulin is a receptor transporter of glucose. With the help of insulin only, it will enter into the cell. So if there is no insulin, no carbohydrate will enter into the cell. If no carbohydrates will enter, cell will not get energy. Okay, cell will not able to work. Okay, cell will not give its function. So basically, insulin is for that purpose only, and it is for storage purpose. Means whatever energy you are taking the food, insulin will store into the cell. It will take the carbohydrates. You will go into the cell. You will go into the cell. Whatever carbohydrate, glucose are roaming into the blood, it will take and took into the cell. What is the function of glucagon? Glucagon will do.
will convert glycogen into the glucose. So whatever extra energy is stored into the cells or into the liver, it will convert into the glucose. So stored form of energy is known as glycogen. Okay, glycogen is stored form of carbohydrates. Okay, it will convert into the glucose. So ulta, opposite to the insulin, whatever stored energy is present into the cell, it will take away from that energy. Means if we have large amount of energy, 10, 20, 30, what it will do, it will convert the energy into the glucose, and it will roam into the blood vessels. So in the blood vessels we have insulin. What insulin do? It will insulin again. It will convert. It will give the glucose to the cell. Okay. So this process will happen. If you This is necessary for what will happen when we eat food. Insulin levels increases. Means insulin will store the energy into the cell. When you doesn't eat food, what will happen? The stored energy you utilize. The stored energy is utilized whenever you didn't eat the food. Okay. You will not you are Whenever you are hungry, you are not able to eat the food. What will happen? The stored energy will utilize. Okay, so this is the function of pancreas. Okay, I think you understood. Okay, so what will happen if large amount of glucose is present into the blood? What will happen if there is decreased amount of insulin? Okay, we have hyperglycemia. Means in the blood we have high levels of glucose. If the insulin is high, very high, what will happen? Insulin will high, glucose will store large amount into the blood. Okay, now into the cells, what will happen? The level of glucose is decreased into the into the blood. So what will happen? Hypoglycemia. So in neither we need hypoglycemia nor we need hyperglycemia. The blood sugar levels are in normal range. Okay, so I think till here you understood. If any doubts, you can ask, or we will continue the lecture. So here we have another type of cell. We talked about alpha cell. So alpha will release glucagon, beta will release insulin. Third type of cell, that is delta cells. I told you delta cells. So we will not we will not talk about delta cells. These produce the hormone somatostatin. So the delta cell will what will it will produce somatostatin, which is identical to growth hormone inhibiting hormone from the hypothalamus. Pancreatic somatostatin acts locally to inhibit the secretion of insulin and glucagon and seems to slow the absorption of the end products of the digestion in the small intestine. The hormone of the pancreas. So basically the somatostatin, what will it will do? It will inhibit the growth hormone. So it will inhibit glucagon and insulin, both, and it will decrease the absorption nutrition. So when it will work? When both glucagon and insulin are high in the blood, somatostatin will release into the blood. Okay, so these are the functions of alpha, beta, and delta. So I will again summarize in the Urdu, in Hindi. Okay, again, then after you can ask the question if any doubts. So basically यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पैंक्रियास है, मैंने बताया क्या, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करते हैं। तो ये फंक्शन मालूम करने से पहले थोड़ा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं, या तो उसके अंदर को चार चीजों में से कोई एक चीज होता है। या तो प्रोटीन हो सकता है, या तो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं, या फिर फैट हो सकता है उसके अंदर, या फिर कोई विटामिन हो, मिनरल्स हो, या कोई अदर न्यूट्रिशंस हो सकते हैं जो बॉडी के रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, जो बॉडी की रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिनरल है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज देखना है कि जब हम खाना खाते हैं तो अच्छे से उसको चबाते हैं, दांतों से उसको चबाते हैं, ओरल कैविटी में उसको चबाते हैं, फिर हम उसको स्वेलो करते हैं, निगलते हैं। जो थ्रोट होता है वहां पे एक पाइप होता है जिसको हम कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस के जरिए से स्टमक में जाता है, स्टमक में अच्छी तरह से
डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब ये है कि जो भी मॉलिक्यूल्स, अब एक समझिए एक राइस है, एक राइस है, इतना बड़ा राइस होता है जब हम खाते हैं। अब राइस के अंदर उसको डाइजेशन करने का मतलब ये है कि उसको इतना बारीक सिंपल मॉलिक्यूल्स में करना है कि उसके अंदर के न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब कर ले हमारा बॉडी। तो डाइजेशन का मतलब ये है। तो डाइजेशन, स्टमक में अलग अलग आपके एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स उसको डाइजेशन करते हैं, तो वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, उसको अब्जॉर्ब करता है जो भी हम खाते हैं। अब अब्जॉर्ब होने के बाद अब उसको ब्लड में दिया जाता है, ब्लड से वहां से लिवर में, लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है। यानी मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में सेल्स है, वो सेल्स के लेवल को, फूड को, न्यूट्रिशंस को लाता है, यानी ताकि वो उसको ले सके, उसको यूटिलाइज कर सके, उसके जरिए से अपने सेल को फंक्शनिंग में ला सके फिजियोलॉजिकली। ठीक है। तो उस लेवल को लाने के लिए आपको लिवर का होना जरूरी है। सो बेसिकली क्या होता है, तो जब मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म में दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इसके बारे में भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो जब ये लिवर ये काम कर लेता है, तो अब ब्लड में आपका जो भी फूड मटेरियल है वो आ गया। अब उसको सेल लेना है, या तो सेल उसको स्टोर करेगा लेने के बाद, या उसको यूटिलाइज करेगा। मैंने बताया था कि फंक्शन, आप बार बार काम कर रहे हैं खाने के बाद, बैठे नहीं नहीं रहे, बैठ ही नहीं रहे, काम कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका एनर्जी जो यूटिलाइज हो रहा है, तो सेल उसको स्टोर नहीं कर रही, वो यूटिलाइज कर ले रही। ठीक है, जितना उसको काम दिया गया वो काम कर रही। ठीक है। तो ये एक तो फंक्शनिंग हो गया। या तो स्टोर करेगा, आप खाने के बाद बैठ गए, कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ फंक्शन नहीं कर रहे, घंटों बैठे हुए, घंटों बैठे हुए, तो जो भी खाया हुआ है डाइजेशन होने के बाद, अब्जॉर्प्शन होने के बाद, वो यूटिलाइज नहीं होगा, बल्कि ओनली स्टोर होगा। ठीक है। तो अब ये स्टोर करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमें दो तरह के हार्मोन की जरूरत है। एक है हमारे पास ग्लूकागोन, और एक है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, स्टोर करना। जो भी आप खाए ब्लड वेजल्स में दिख रहा है, चलो पकड़ो उसको अंदर डालो, सेल के अंदर डालो, या फिर सेल के पास आ गया तो सेल खुद अंदर ले लेता है उसको। ठीक है। तो ये इंसुलिन का काम क्या है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, सिंपल ग्लूकोज सब्सटेंसेस है, सबको सेल तक पहुंचाना है। ठीक है। अब ग्लूकागोन का काम क्या है, जो भी स्टोर्ड फॉर्म है ग्लूकोज, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। जो भी हम ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यानी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो इंसुलिन कर रहा था उसके ऑपोजिट में करता है, उसको यूटिलाइज में लाने के लिए। अब ग्लूकोज, नहीं भाई, आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। आप ऐसा स्टोर होके बैठ के नहीं रह सकते, आपको काम काम करना पड़ेगा, सेल को एनर्जी यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन किसका है, ग्लूकागोन का। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लूकागोन का है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन। तो अगर या तो ब्लड में, इसमें हमारे जो प्रॉब्लम आता है इंसुलिन का, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल देखने को मिलता है, वो है डायबिटिक, डायबिटिक मिलिटस। डायबिटिस मिलिटस का मतलब क्या है, पैंक्रियास का जो बीटा सेल है वो इंसुलिन को जितना अमाउंट प्रोडक्शन करना है वो प्रोडक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको या किसी को डायबिटिक मिलिटस हो सकता है। ठीक है। तो डायबिटिक मिलिटस होने से क्या होगा, ग्लूकोज तो ब्लड में रहेगा, लेकिन सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। जब सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, तो सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो सेल डेथ हो जाएगा, सेल अपना फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलेंगे, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना। हाँ, अगर सेल, इंसुलिन इतना ज्यादा हो गया है कि सेल को ज्यादा ग्लूकोज दे रहा है, और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो गया, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। तो मॉर्निंग मिनिमम अमाउंट जो बताया जाता है 70 to 110, जो है ये नॉर्मल है आपका। 70 से कम अगर होगा तो ये हाइपोग्लाइसीमिया होगा, और 110 से ज्यादा अगर खाने के बाद होगा, सॉरी, खाने से पहले होगा तो ये भी ज्यादा होगा। अगर 110 से ये 160 तक, ये भी नॉर्मल है आफ्टर ईटिंग फूड। ओके, PLBS पोस्ट लंच,
और पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर लेवल्स। ओके, तो ये 70, ये 110, ये 110 to 160, so these are the normal values. Okay, so these are all about pancreas. I think you understood very well. If any doubts, you can ask me.